हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप 2023-24 के अंतर्गत जो फर्स्ट सेक्शन में आई कास्ट एग्ज़ाम है, इसका दूसरा टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, इनका क्या पर्पज़ है, क्यों इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है ग्लोबली, और क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कैटेगरीज हैं, इस वीडियो में हम इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूनेस्को क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ चलेंगे। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 में हुआ था। इट इज़ द सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। यानी लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बना था, उसी का सक्सेसर इसको माना जाता है 1945। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है यूनेस्को का। यूनेस्को का जो मुख्य मोटिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके इस्टेब्लिशमेंट का, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा, थ्रू किसके द्वारा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, द साइंसेस एंड कल्चर। इन सब के द्वारा इंटरनेशनली पीस को और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये यूनेस्को का मोटिव है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेलेक्ट्स sites to be listed as UNESCO World Heritage Sites. World Heritage Committee is the committee that selects the sites to be listed as UNESCO World Heritage Sites. The convention concerning the protection of the world's cultural and natural heritage, adopted by the General Conference of UNESCO on 16 November 1972. The convention that is held on 16 November 1972 and it is signed by 193 countries. The 5 siege strategic objectives of World Heritage Convention: credibility, conservation, capacity building, and communication and communities. These are 5 C's are the strategic objectives of this convention. Purpose of the World Heritage Site. World Heritage is the designation for places on earth that are of outstanding universal value to humanity. Outstanding universal value to humanity. That places are recognized as World Heritage Site. The sites having cultural, historical, scientific, or other forms of significance are selected as World Heritage Site. The sites are judged to certain cultural and natural heritage around the world. Its main purpose to encourage the identification, protection, and preservation of cultural and natural heritage around the world, considered to be of outstanding value to humanity, to protection of a monument from threats like armed conflicts and war, natural disaster, climate change, economic pressure, or human activities. Categories under which World Heritage Sites
are selected. There are three categories of World Heritage Sites. First is cultural, natural, and mixed World Heritage Sites. Total number of World Heritage Sites up to September 2023 is 1199. Total number of World Heritage Sites is 1199, under which cultural heritage or 1933, 933, natural World Heritage Sites are 227, and mixed World Heritage Sites are 39. These all World Heritage Sites are located in 168 countries with 59 selected areas. In the world, at the top, a largest number of World Heritage Sites in Italy, that is 59. Second position, China have 57 World Heritage Sites, and at third and fourth place, France and Germany have equal number of World Heritage Sites, that is 52. Spain 50, and India has sixth position in this list, having 42 World Heritage Sites. In 1960, the international campaign to save the monuments of Nubia, the first campaign to save the monuments of Nubia in 1960. The most famous of these are the complexes of Abu Simbel and Philae. ये जो मोनूमेंट्स थे, टेम्पल्स थे, इनको वहाँ डैम बनने के कारण जो ये सारे टेम्पल्स सिंक कर रहे थे, तो इनको सेफ प्लेस पे लाया गया और वो एक कैंपेन चलाया गया इंटरनेशनली. उस कैंपेन के द्वारा इनको सुरक्षित किया गया. तभी से आवश्यकता महसूस की गई कि पूरी दुनिया में जो इस तरीके के हिस्टोरिकल या कल्चरल साइट्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं या जिनको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उनके आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ और उनको इस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ने का शुरुआत हो गई. तो इन इंडिया टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज 32, अंडर विच कल्चरल 34, natural 7, and mixed, that is 1. Kaziranga National Park in Sikkim. Kaziranga National Park in Sikkim, this is mixed World Heritage Site. And in the latest, there are 2 sites included in World Heritage list, site list. 41st, that is Santi Niketan, West Bengal. It is inscribed in World Heritage Site list in September 2023. And 42nd is the Sacred Ensembles of Hoysalas, Hoysal temples of Velur, Halevid, and Somnathpura in Karnataka. These 2 are the topics. This topic is for your junior level exam, and this Sacred Ensembles of Hoysalas in senior level exam. So in next videos we discuss about Shanti Niketan and Sacred Ensembles of Hoysalas. Importance. What is the importance of World Heritage Site? World Heritage Sites provide a unique insight into the history and culture of a country or region. They are often popular tourist places and can help to boost the local economy. They should be protected and preserved to ensure their continued existence for future generations. ये जो प्लेस हैं, ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी
जाने जाते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको रिकॉग्निशन मिलती है, और ये वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करते हैं, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इनको प्रिजर्व किया जाता है. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. द लिस्टेड साइट gains international recognition and legal protection and can obtain funds from World Heritage Fund for conservation under certain conditions. Now we will discuss about the criteria for UNESCO World Heritage Sites. What is the criteria under which these sites are selected? Site must be of outstanding universal value and at least 1 out of 10 criteria fulfilled. Site must be of outstanding universal value and at least 1 out of 10 criteria fulfilled. Total 10 criteria for the selection, and site fulfill one or more criteria out of them. Up to 2004, 6 cultural criteria and 4 natural criteria. But from 2005, one set of 10 criteria formed. These 10 criteria are as follows. First, human creative genius. कोई भी ऐसा मोनूमेंट जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया और जो उसके उत्कृष्ट नमूने के रूप में जाना जाता है, वो इसके अंतर्गत आता. दैट साइट इज ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस होना चाहिए, या इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज. ये जैसे अपना ताजमहल और अजंता केव्स इसमें आ जाएंगे. इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, द टेस्टिमोनी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस. ये सारे यहाँ पर जो हैं ये सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज साइट्स के लिए क्राइटेरिया हैं. कल्चरल ट्रेडिशन लाइक सेक्रेड इन सिंबल्स ऑफ व्हेसल्स. सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री में जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा हो, जैसे साइट ऑफ नालंदा. ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट्स लाइक धोलावीरा, ये हड़प्पन सिटी. तो दीज ऑल आर cultural criteria for cultural heritage. And sixth is the heritage associated with events of universal significance. Natural phenomena or beauty, major stages of Earth's history, significant ecological and biological processes like mangrove forests, and the significant natural habitat for biodiversity like Western Ghats. Process for selection. What is the process for any site to select in World Heritage Site list? Site is nominated first by country in which they located. First, it is nominated by the country in which they located. A site must meet one or more of 10 World Heritage Committee selection criteria. Site is examined by international experts after approval of advisory bodies. Files sent to World Heritage Committee. This committee determines which site meet outstanding universal value criteria for inscription. 27 state parties vote for site inscription. There are 3 main advisory bodies that play a very important role for the selection of any site. First is the ICOSMOS, that is International Council on Monuments and Sites. It is established in 1965 and the headquarters of ICOSMOS in Paris. It provides evaluations of cultural and mixed properties. Second is the IUCN, that is International Union for Conservation of Nature. It is established in 1948 and headquarters of IUCN in Switzerland.
And third is the ICCROM, that is International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. Only countries that sign World Heritage Convention can submit nominations. And this is the process. First, tentative list prepared by the country in which the site is located. Tentative list goes to nomination file. Nomination file goes to advisory bodies. At least two bodies approved the sites, and then this advisory body, from advisory body, file goes to World Heritage Committee, and World Heritage Committee decides that is that site is inscripted in the list or not. And it also decide under which criteria that site is inscripted in the list.